दूसरा लखनऊ और तीसरा आयोजन आज बेंगलुरु में संपन्न हो रहा है। इनमें तीनों ही कार्यक्रम इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित रहे हैं, जिसमें से दो तो कर्नाटक राज्य से ही जुड़े हुए हैं। इससे हमें क्या देखने को मिलता है? इससे यह देखने को मिलता है कि देश के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है। साथियों, एरो इंडिया का यह आयोजन देश के विशेषकर कर्नाटक राज्य के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रति आपके कमिटमेंट का एक एक्सप्रेशन है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक की भूमि चंदन की भूमि है। जिस तरह यहाँ के चंदन की सुगंध देश दुनिया में दूर दूर तक फैलती है, उसी तरह यहाँ आयोजित होने जा रहे एरो इंडिया के माध्यम से भारत की रक्षा क्षमताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस आयोजन को इतने ग्रैंड स्केल पर आयोजित करने में श्री बसवराज जी बोम्मई, चीफ मिनिस्टर कर्नाटका का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। साथियों, भारत अपने बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट और कास्ट कॉम्पिटिटिवनेस के कारण एक बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी यह आगे बढ़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यापक दृष्टि और संकल्प के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 4-5 वर्षों में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष भारत की G20 की प्रेसिडेंसी भी ग्लोबल फोरम पर भारत के बढ़ते कद को दर्शाती है। देवियों व सज्जनों, इस आयोजन में अनेक देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स, सर्विस चीफ्स, सीईओज, ऑफिशियल्स और डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। मैं आप सभी का रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे इस अगस्त गैदरिंग को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस एग्जीबिशन में देश विदेश से 700 से अधिक एग्जीबिटर्स अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की विशाल भागीदारी भारत के उभरते बिजनेस पोटेंशियल में डोमेस्टिक एवं ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के एक नए कॉन्फिडेंस का भी प्रमाण है। मैं आप सभी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर भारत की यात्रा में सहयात्री बनने का भी आह्वान करता हूं। अंत में एक बार फिर एरो इंडिया 2023 के इस महाकुंभ में हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए, यहाँ उपस्थित होने के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अतिथियों को हमारे यहाँ भगवान का दर्जा दिया गया है। मैं देश विदेश से पधारे देवतुल्य सभी आगंतुकों की उत्साहजनक भागीदारी के लिए धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I request the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Baswaraj Bommai ji, to kindly address the August gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆವಾಗಿರುವಂತ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಆದರಣೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಏರೋ ಶೋದ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರೇ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ದ ಆನರಬಲ್ His Excellencies, Defense Minister from different friendly countries,
Chief of Defense, Chief of Army Staff, delegates. Welcome once again in our top story. We start off with the latest, the top story for today. Asia's largest Aero India show 2023 is all set to begin as a few moments from now, and the Prime Minister will be flagging off the mega event. Here's a detailed report on what this 5-day-long event holds for visitors. Take a look. Few hours from and PM Modi will be flagging off the Aero India 2023. In the 5-day-long event of Aero India 2023, India will be showcasing indigenous equipment and forging partnerships with foreign companies. Union Defence Minister Rajnath Singh, who visited Bengaluru yesterday, has kick-started the event by this curtain-raiser press conference. Addressing the press conference, the Union Defence Minister Rajnath Singh asserted the importance of this 5-day-long event for India. आज जब हम विश्व की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की राह पर अग्रसर हैं, मेरा मानना है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. According to him, the Aero India 2023 will showcase the country's manufacturing process and the progress achieved towards realizing the Atmanirbhar Bharat as envisioned by the Prime Minister. कर्नाटका हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाले राज्यों में सबसे अग्रणी राज्य है और यह राज्य अपनी स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स और रोबस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए आज से नहीं बल्कि पहले से जाना जाता है और यह मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों के लिए डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल डिफेंस और एविएशन कंपनीज का प्रीफर्ड डेस्टिनेशन है. Spanning over 5 days, the event on the theme "The Runway to a Billion Opportunities" will radiate the rise of a strong and self-reliant new India in the defense as well as space sector. The first 3 days of the event will be business days, while the remaining 2 days will be open for the public to witness the show. This biggest ever to date event comprises of some power-packed programs such as Defence Minister's Conclave, we have laid down a policy where more than 45,000 youngsters will be involved in building the defense and aerospace industry in Bangalore and other places. And I once again, I thank our Honorable Prime Minister who dreams of doing things, dreams of achieving, and dreams of the greater India. And not only dreams, he makes the dreams come true. He strives to make the dreams come true. He is leading the country by example and he is leading by front. Therefore, I once again thank and congratulate Honorable Prime Minister, Honorable Rakshana Mantri, and I once again assure the performance of Karnataka in defense and aerospace will continue to add to the strength and might of our defense. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. May I request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to release the Aero India 2023 commemorative stamp. Thank you, sir. It is my privilege to request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly address the distinguished gathering of Aero India 2023.
आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित कर्नाटका के गवर्नर श्री, मुख्यमंत्री श्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सदस्य, देश विदेश से आए डिफेंस मिनिस्टर्स, इंडस्ट्री के सम्मानित प्रतिनिधि, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं एरो इंडिया के रोमांचक पलों का गवाह बन रहे सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमईज भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। साथियों, यहां एरो इंडिया के साथ ही डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव और सीईओज राउंड टेबल इसका भी आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों की सहभागिता, सीईओज की ये सक्रिय भागीदारी एरो इंडिया के ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। ये मित्र देशों के साथ भारत की विश्वसनीय भागीदारी को आगे ले जाने का भी एक माध्यम बनेगा। मैं इन सभी इनिशिएटिव्स के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, एरो इंडिया एक और वजह से बहुत खास है। ये कर्नाटका जैसे भारत के टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसकी महारत है, एडवांस है, ऐसे राज्य कर्नाटका में हो रहा है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे। इससे कर्नाटका के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेगी। मैं कर्नाटका के युवाओं से भी आह्वान करता हूं, टेक्नोलॉजी को फील्ड में आपको जो महारत हासिल है उसे रक्षा क्षेत्र में देश की ताकत बनाइए। आप इन अवसरों से ज्यादा जुड़ेंगे तो डिफेंस में नए इनोवेशंस का रास्ता खुलेगा। साथियों, जब कोई देश नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के हिसाब से ढलने लगती है। एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। एक समय था जब इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्फ टू इंडिया की
एक विंडो भर माना जाता था। बीते वर्षों में देश ने इस परसेप्शन को भी बदला है। आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारे यहां बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज भारत की संभावनाओं का, भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। गुजरात के बड़ौदा में C-295 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में HAL के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं। हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। इस दौरान किए गए प्रयास भारत के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज मैं भारत के प्राइवेट सेक्टर से आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। भारत में डिफेंस सेक्टर में आपका हर इन्वेस्टमेंट भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में एक प्रकार से आपका व्यापार कारोबार के
नए रास्ते बनाएगा। नई संभावनाएं, नए अवसर सामने हैं। भारत का प्राइवेट सेक्टर को इस समय को जाने नहीं देना चाहिए। साथियों, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसपोर्ट की गूंज है। आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है, जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नीयत है, वो अभूतपूर्व है। हर इन्वेस्टर को भारत में बने इस सपोर्टिव माहौल का खूब लाभ उठाना चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भारत में किए गए रिफॉर्म की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इंडियन इनोवेशन के अनुकूल माहौल बनाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। भारत के डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी देने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब कई सेक्टर में एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी मिली है। हमने उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, उसकी वैलिडिटी बढ़ाई है, ताकि उन्हें एक ही प्रोसेस को बार बार न दोहराना पड़े। अभी 10-12 दिन पहले भारत का जो बजट आया है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी बढ़ाया गया है। इसका फायदा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी होने वाला है। साथियों, जहां डिमांड भी हो, कैपेबिलिटी भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, नेचुरल प्रिंसिपल कहता है कि वहां इंडस्ट्री दिनों दिन और आगे बढ़ेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारत में डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने का सिलसिला आगे और भी तेज गति से बढ़ेगा। हमें साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम एरो इंडिया के और भी भव्य और शानदार आयोजन के गवाह बनेंगे। इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। Thank you, sir. May I request the Honorable Prime Minister and dignitaries on the dais to kindly take their seats on the grandstand. Ladies and gentlemen, with the flying display ahead, Aero India 2023 is all set to soar. We hope that this edition leads to building of bonds, new partnerships, and discovery of new horizons.
All right, so that is the Aero India show 2023 that was just inaugurated by the Prime Minister. He also spoke about India's ambitions as it holds this aero show. Now, we are given to understand that the major focus, of course, for India is going to be both export opportunities as well as joint development and defense equipment, as well as, of course, the much talked about defense ministers conclave, which is being held at on the sidelines of this aero show. Now, we are given to understand, of course, about 98 countries are participating in this biennial event, which is being held in Bengaluru. Right now, of course, we are awaiting the air show that is going to be held, a display of not just the flying prowess of India, but also we are told that there will be other aircraft that will be participating. Now, apart from what is going to be a spectacular air show, we are learning that defense ministers of about 32 countries, air chiefs of 29 countries, 73 CEOs of global and Indian firms are expected to attend this event, where about 809 defense companies, including MSMEs and startups, will be showcasing their niche technologies and the growth in the aerospace and defense sector. Visuals on your screen are coming to you from Bengaluru, where we are awaiting for the fly past now to begin. Now, this, of course, is the biggest air show in Asia, and it does, of course, it has been much anticipated. Now, as far as the government is concerned, we are hoping to focus on showcasing indigenous equipment and, of course, foraging new partnerships with foreign companies during this 5-day event that, of course, is themed The Runway to a Billion Opportunities. Now, apart, of course, from self-reliance in defense, India is also seeking perhaps to diversify its weapons basket, most of which so far have been Soviet origin, but that's something that India has been wanting to change for a while now. Just to give our viewers a sense of the exhibitors that are participating in this air show now, we are told that Airbus, Boeing, Dassault Aviation, Lockheed Martin, Israel's aerospace industry. Ladies and gentlemen, in a short while from now, we are about to begin the air displays. Keeping up with the beat and heat, it's time now for the zipping fighter aircraft. You're about to witness a low-level aerobatic display by the world's most agile fighter aircraft, the Su-30 MKI. Now, this aerobatic display will give you some idea about the maneuvers the flanker is capable of performing. The pilot in command today will be Wing Commander Aditya Suhag, Flight Commander of 222 Squadron, which is a maritime BrahMos squadron. Along with him as WSO is Flight Lieutenant Jaipreet. Both of them have mastered their roles for today's display, while Suhag will be busy toying with the 26-ton air superiority fighter and making it loop, tumble, yaw, roll and spin. Jaipreet would be monitoring the fighter's critical parameters like height, speed and engine. Pilots for low-level aerobatics are handpicked from amongst the finest and the highest experienced aircrew of the Sukhoi fleet.
We are standby for the mighty Sukhois to take off right in front of you. From your left, rolling now. The deafening roar of the engines of the mighty Sukhoi taking off. Park positioning with the left turn to execute the famous loop, tumble, yaw. The Su-30 MKI is the only operational aircraft in the world today that can do this extremely complex maneuver. Taking the center stage now. Ready to pull up. Here he pulls up. He is into a loop. This maneuver of the aircraft will describe a circle on the vertical plane. It is inverted, coming as a somersault. We call it the tumble. And that's the yaw, ladies and gentlemen. Loop, tumble, yaw. Definitely during this time, the aircraft says goodbye to all known laws of aerodynamics. This combat maneuver helps him to change his direction mid-flight. Apart from the sheer flying skill, this exquisite maneuvering was made possible by a combination of thrust-vectored engines and fly-by-wire technology. This time from our right, positioning along the runway, taking you for a rock and roll. Here he goes, spinning right in front of the dais. Flying in this manner requires not only a good degree of situational awareness, but also absolute mastery on the aircraft and a thorough knowledge of its capability. One more time, shift your gaze towards your left. Do you know what distinguishes supersonic aircraft from each other? It is the ability to fly low and slow, and this is precisely what the MKI will demonstrate to you now, coming in from your left. The speeds are as low as 240 to 250 kmph. And at this moment, the phrase, time stands still, does all the justice to this picturesque moment. For today's display, both Suhag and Jaipreet have mastered their roles and are now ready to showcase yet another unique feature of the aircraft. After the right turn, they are again coming to take the center stage. Keep following the aircraft with a bank. Here he comes, 12 o'clock to us. Here he pitches up. It's just as cutting the sky into two halves as easily as you slice fruits with your kitchen knife, and that's why we call it the slice.
landing maneuver was only possible due to the sheer skill of the pilot and the spectacular handling characteristics of the Sukhoi at all speed regimes. And now coming in for the high-speed run along the days, this aircraft is now running at 900 kmph. And as the saying goes, don't be fooled by the noiseless dash. Thunder always follows the Sukhoi 30 MKI. As you're seeing the pilot turning left, he will shortly lower the landing gear to come in for a landing. Now generally an aircraft takes the full runway to come to a full stop after landing. However, the fighter will now demonstrate the short landing capability where you will see it complete its roll in less than half the runway, coming to a halt well short of you. From your left, coming in for landing. With the grace and all the panache, you're now seeing the aircraft touching down. And now the pilot has deployed the brake parachute to ensure a very short landing run. Ladies and gentlemen, can we hear it loud for a very own thunderous yet mighty, the Sukhoi 30 MKI. Ladies and gentlemen, after that captivating display by the Sukhoi 30s, here we have in front of us the light combat helicopter, the Prachand. Though light in weight, this machine carries the punch of a heavyweight. This aircraft has entered operational service, and it is absolutely certain it would live up to its name, the Prachand, the fierce, striking terror in the hearts of the enemy. The display today is being performed by Wing Commander John and Group Captain Rajiv Dubey. Ladies and gentlemen, please notice the rapid pull-up and the unique ability of the rotor as the pilot bunts the helicopter under negative G to come to a hover position far away from the ground. As you can see, this flying machine, the Prachand, has sufficient reserve of engine power and the rotor thrust. The Prachand now is diving sharply, gathers momentum to come in front of us to demonstrate sharp minimum radius turns.
हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों में मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी में तुमको हार दो, आरमान शान या जान का उदान बाजे, धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। Ladies and gentlemen, here she is, the light combat helicopter Prachand, right in front of you. It's now readying to perform some lateral movement parallel to the runway, which will culminate in the majestic extreme tail-up maneuver. Here she is, moving rearward, top speed. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो, आन शान या की जान का उदान आज। Now she goes, tail up, the extreme tail up maneuver. This demonstrates the razor sharp response and the control path available to the pilot. Hindustan Aeronautics Limited has placed India among those very few countries that have capability to design, develop and produce dedicated combat helicopters. Combined with the single-enged light utility helicopter World War Horse ALH-3, HAL has rendered India truly Atmanirbhar in rotary flying machines, both in intent and in content. Is doing a rudder turn right in front of us. Self-reliance in such strategic machine is unequivocal for India's defense, and products like ALH, the light combat helicopter Prachand and the new baby light utility helicopter are part of Atmanirbhar success story of HAL. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause as the Prachand is exiting after an enthralling display. हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों में मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी में तुमको हार दो, आरमान शान या जान का उदान बाजे, धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
From the skies, it's again the runway. You are about to witness the power-packed takeoff of the Surya Kiran aerobatic team. They will take off in synchronized set of 3, twice, and the single 3 aircraft will take off right after them. We are standby for the Surya Kiran aerobatic team takeoff. The first 3 set, ladies and gentlemen, taking off right in front of you. It's a 9 aircraft display team. Following the first are the second 3 set. Rolling behind them, the single 3 aircraft. They will be back with a bang. In a short while from now, we will present to you the thrilling, ever-scintillating and heart-stopping air display of the indigenous lightest fighter of the world, Tejas. You will be able to watch the magnificent maneuvers of this aircraft on the screen placed in front of you, showing the live feed provided by DRDO's indigenously developed UAV Tapas. Wing Commander Karthikeya, fondly known as Cat amongst his friends, has lined up the Tejas on the runway for the first maneuver, the show-off takeoff. This maneuver is designed to showcase the might of the powerful GE 404 engine. Ladies and gentlemen, Tejas rolling and piercing into the blue skies of Bengaluru. As the aircraft inverts and comes down again for the next maneuver, please brace yourself for the hesitation roll. Please look to your right as the aircraft accelerates for the next maneuver and carries out a point roll and stops each time over. There it goes. 1, 2, 3, and 4. And here it rolls again. Continuing to enthrall you all, it pulls up again to execute the vertical pitch back. Watch the curve as it goes up into the lovely skies and dives down again.
spots an adversary and starts turning like a beast. See the aircraft moving away, let us remind you of the decades of effort which have gone into making this program a resounding success. Without the foresight and technical acumen of every individual involved, this success won't have been possible. Please look to your left as Kartikeya prepares to push the aircraft to the other end of its envelope with the red eye negative G turn. There it goes, turning the other way around and showing off the versatility of not only the aircraft, but of the pilot too, as he sees all the red in the world. Ladies and gentlemen, please look ahead as the aircraft positions itself square of the dais for the vertical Charlie. There it goes, pulling up into the sky, showing off the Delta platform. Illustrating the Indian Air Force's motto, touch the sky with glory. Here it goes, rolling towards the blue yonder. Please look to your left as Kartikeya starts knocking off some speed to greet this wonderful gathering and flying past you at a snail's pace. Ladies and gentlemen, towards your left, Tejas is so slow at a speed of 120 knots that even the winds stop to stare. Ladies and gentlemen, from your left, the slow speed run. As he engages the burners of the powerful 4E404 engines, the aircraft rapidly climbs out and positions for the next maneuver of a half roll. The kind of weapon that the aircraft carries is phenomenal, and that makes the combat capability tremendous and lethal. Please shift your gaze to the right. Kartikeya prepares to roll and invert the aircraft. He will greet all of you in Spider-Man style and then roll all over again. As Wing Commander Kartikeya prepares off and prepares to land,
let me tell all of you that with the induction of the Tejas, the Indian Air Force in particular and the Indian aerospace industry as a whole has come a long way in indigenization and self-reliance. With enhanced capabilities in terms of envelope expansion, better avionics, and air-to-air refueling, the Tejas can call itself a truly modern platform. As Karthike touches down, I would urge all of you to please give a huge round of applause for our very own Tejas and its braveheart pilots. After the scintillating LCA, time now. Soon crossing overhead and flying in an arc will be the globe formation. Coming in from your left, ladies and gentlemen, now the C-17 Globemaster along with the Hawks of Surya Kiran aerobatic team. C-17 Globemaster is a massive long-haul aircraft that has been tackling distances and oversized loads. Right now in an arc formation in front of you, the C-17 Globemaster with the Hawks of Surya Kiran aerobatic team. Ladies and gentlemen, please look right ahead. The light utility helicopter. HAL is extremely proud to present here in display its youngest and latest member of the growing helicopter family. A few minutes earlier, this was the aircraft that led that 15 aircraft helicopter Atmanirbhar formation. He's doing it. Salute to the dais. The display today is being performed by HAL Chief Test Pilot Wing Commander Unni Pillai along with Wing Commander Bambani. Wing Commander Unni has flown over 8,000 hours over 30 different types of flying machine, both fixed and rotary wing. He has been the CTP, the Chief Test Pilot of Hindustan Aeronautics Limited, for over 14 years in his illustrious career spanning over 38 years both in Indian Air Force and Hindustan Aeronautics Limited. Ladies and gentlemen, here we have the light utility helicopter right in front of us, performing a unique helicopter maneuver, the pirouette. Wing Commander Unni Pillai is keeping the nose pointed to the center as he laterally traverses the circumference of that circle. A very deft maneuver. This demonstrates adequate control power, agility, and the extreme experience of the test pilot.
Here they go and perform the extreme tail-up maneuver. Designing a helicopter for India's vast and varied terrain with its conflicting requirements is a daunting task. HAL lived up to this challenge, achieving it completely in-house in designing light utility helicopter. HAL therefore is capable of fully customizing this helicopter to any specific needs of any customer, civil or military, Indian or foreign. The light utility helicopter, after its operational clearance, has now entered the production phase. More than 1,000 of these helicopters are expected to be rolled out from the recently inaugurated Asia's largest helicopter factory in Tumkuru. The helicopter is now performing a few stall turns in front of us. Ladies and gentlemen, the LUH has completed its captivating display in front of us. The display today is more special as it happens to be the final display of HAL Chief Test Pilot Wing Commander Undi. He will be hanging his boots next month after a glorious career as a test pilot. Thank you very much, Wing Commander Undi, for your leadership. And ladies and gentlemen, please give a warm round of applause, wishing both the man and the machine good luck. देवी एवं सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें एम्बेसडर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स के नाम से विख्यात सूर्य किरण एरोबाटिक टीम का ग्रुप कैप्टन GL ढिल्लों के नेतृत्व में। सूर्य किरण 7 अब आपकी बाई ओर पोजीशन हो चुके हैं। आप सब के जोश लेवल्स को बढ़ाने देयर इज स्क्वाड्रन लीडर पहला फ्लाइंग इन्वर्टेड। अब सूर्य किरण टीम आ रही है आपकी बाईं ओर से बैरल रोल के लिए। मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस मैनूवर के दौरान टीम के सारे मेंबर्स एक दूसरे से मात्र 5 मीटर की दूरी पर उड़ान भर रहे हैं। ऐसा लग रहा हो मानो एक अदृश्य डोरी से बंधे हुए हो। टीम ने करीबन 72 शहरों में 600 से भी अधिक डिस्प्लेस करने का दुर्लभ लक्ष्य प्राप्त किया है और केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी भारतीय वायुसेना का परचम लहराया है। इनमें से कुछ देश हैं म्यांमार, श्रीलंका, लाओस, चाइना एवं UAE। And that was number 7 buzzing through the skies to carry
40. नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों के अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब आप सूर्य किरण टीम को अपने ठीक सामने से अपनी ओर बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। Approaching from straight ahead, the team is now coming for a crossover break, and let's hear out for the leader's call. Correction, break now. आप देख सकते हैं सूर्य किरण 1, 2, 3 और 4 को आसमान की बुलंदियां छूते भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम को चरितार्थ करते हुए। Glossy bright aircraft that you just saw in the skies are kept ready to fly by our maintenance team, led by Wing Commander Rana, Wing Commander Negi, Squadron Leader Dayal and Master Warrant Officer Kuldeep Kumar. Next, please allow me to take you on a journey where we're bringing the thrill lower and closer to you. Earlier we were flying at 500 feet, but now we will dazzle you by flying at heights of mere 100 feet above the ground and at crossing speeds in excess of 1500 km per hour. Coming in for a barbed wire cross are Surya Kiran's 8 and 6 from your left and Surya Kiran's 9 and 5 from your right. Coming in from your right is an 5 aircraft in an Arrowhead formation making the alphabet A. Please look to your right. And from the left, number 5, Wing Commander Bordalo and Squadron Allen, they're piercing right through the alpha for that perfect loop. What an icing on top of the cake. Well, as the temperatures in this arena are starting to soar,
Coming in from your right are Surya Kiran 6, that is Wing Commander Alok, along with 8 and 9. They will be rolling synchronously to my tunes like ballerinas in the sky in this well choreographed maneuver. Here they make an entrance from your far right. Ready for a roll? 3, 2, and 1. There they go! Advancing next from your right will be Surya Kiran's 1, 4 and 7 with Surya Kiran's 2 and 3 ready to draw circles around them. Flying as number 2 is Squadron Leader Garg and as number 3 is Wing Commander Bhardwaj. They will be making a helical structure resembling the shape of a DNA. And in our DNA we store the team's motto of Sadaiv Sarvottam, or always the best. From your right there goes number 3, being closely followed by number 2. Next to the skies are the synchro pair. Please shift your gaze to the front. From the left, that is number 6, our very own Cupid, drawing an arrow through the heart. And there it is, a beautiful Surya Kiran heart dedicated to Aero India 2023. और आज के आखिरी सूर्य किरण मैनूवर के लिए अब आप टीम को अपने ठीक सामने से अपनी ओर बढ़ता हुआ देख पाएंगे। तो आए सुने सूर्य किरण टीम लीडर की कॉकपिट से उनकी आवाज। सूर्य किरण और ये था टीम लीडर का सल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को। आज हमारे साथ ग्राउंड पर उपस्थित है विंग कमांडर अश्विन हमारे कैमरा क्रू के साथ। आज इनकी जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करना कि आज का डिस्प्ले व टीम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो तथा टीम लीडर तक रेडियो द्वारा जरूरी संदेश पहुंचाना। Other than the pilots flying today, we have Squadron Leader Chandel and the Squadron Doctor is Squadron Leader Sudarshan.
Various displays to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, or 75 years of Indian independence. Some of the cities where the displays were carried out are Bhubaneswar, Puri, Guwahati, Kalaikunda and Vadodara. To keep up with the schedule of our team, you can follow us on Surya Kiran _IAF on Instagram, Twitter and Facebook. जैसा कोई नहीं है, नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ मुझको तड़पा तिरुनाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। As the Surya Kiran's taxi back, I, Flight Lieutenant Rupima, the team commentator, would like to thank all of you for being such a wonderful audience. Ladies and gentlemen, we extend our heartfelt gratitude to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, and other dignitaries who have graced this occasion. With the inaugural of Aero India 2023, we have formally set the runway to 1 billion opportunities. देवियों एवं सज्जनों, अब हमारे मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्थान का समय आ गया है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि आप अपने स्थान पर बैठे रहें। श्री नरेंद्र मोदी जी का आज के इस भव्य आयोजन में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हम आभार। जेल के वो 15 हेलीकॉप्टर जिसकी धमक अभी आपने आसमान में देखी, वो तमाम चीजें करीब से देखने का मौका मिलेगा इस एरो इंडिया 2023 में। और प्रधानमंत्री का ये काफिला
And so, viewers, Aero India 2023 has begun. You heard the Prime Minister speak, and our big focus this Monday is on this Asia's biggest air show. And joining me here in the studios is Group Captain Devnath. Sir, a very warm welcome to our studios in Republic. First of all, when we talk about the Aero India show, you were just telling me about how it all began way back in 1996. This is the 14th because it was halted for 1 year. So for our viewers, could you tell us something about the significance of this year's show? It's the biggest in Asia. Oh yes, what a great day. Indian Air Force always looks forward to such organizations and such air shows because this is where Indian Air Force gets an opportunity to showcase its combat potential. But that is only a part of it. Today's show is also a huge event for India. Ministry of Defense is organizing it and has invited global participation. It is a day when Boeing from America, Airbus Industries from Europe, General Dynamics, all big companies from all over the world are participating in this air show. All these big companies are looking towards India because they want to participate with India in our great march forward as far as aerospace industry is concerned. Under Make in India, Government of India has invited all these agencies. Big firms, more than 60 global CEOs are participating. Very soon, under various projects of Atmanirbhar Bharat, we will be manufacturing best of the weapon systems, best of the capital equipment in India. Yes, we do need some transfer of technology. More than 200 contracts are being signed in next 3 days, worth 75,000 crore, a huge leap forward by India. It also establishes India as an agency, as a very reliable partner. We have best of the engineers, we have IITs, we have DRDO, we have ADE, Aeronautical Development Establishment, and as far as aviation electronics is concerned, we have LRDE, Electronic Research Development Establishment. They are one of the leaders in world aviation sector. HAL, Hindustan Aeronautics Limited. Today is a great day for them because we are showcasing Bharat Mein Nirmit under Make in India, Tejas fighter Viman, one of the best light combat aircraft in world. This aircraft has proven its worth in so many air shows. So many countries are now keen to purchase, buy Tejas from us. Very soon we will be developing Tejas Mark II. Many African countries, Latin American countries, and Southeast Asian countries have already shown their interest and expressed their desire to purchase Tejas from us. LCH, Light Combat Helicopter, Dhruv, and its attack version, Prachanda, has just now flown. Prachanda is one of the best attack helicopters in Asia. It can fire air-to-ground laser-guided rockets. It can drop bombs on enemy troops' concentration. And most important, it has got an inherent built-in air-to-ground machine gun with which it can just neutralize enemy concentrations on ground. Today, we are also showcasing all the drones which have been designed, developed and manufactured in India by DRDO. NAL, National Aeronautics Lab, is now almost on the verge of getting into contact with many countries in world who are keen to import India-made drones for their armed forces, for their air forces. A great day for India. Right. Right, sir. Group Captain Devnath, stay with us and many thanks for putting that into perspective, telling us about the significance of this Asia's biggest air show. We are tracking Aero India 2023, inaugurated by the Prime Minister a short while back. You heard his speech. The big focus is Atmanirbhar Bharat. And please resume your seats. Mr. Ketkar, please take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat. Before
I call upon the Honorable LOP. I wish to indicate that when we hold the floor, it should be with the underlying object that we get concrete suggestions so that the house can be run. मैं आप लोगों से एक बार फिर पुरजोर अनुरोध करता हूं मैं आप लोगों से विनती करता हूं हमें हमारा आचरण उस मापदंड पर रखना है कि देश की जनता हमारे बारे में सकारात्मक रवैया रखे। हर सदस्य से मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने आचरण में संविधान निर्माताओं की भावना को और भारत के संविधान के मूल मंत्र को ध्यान में रखें, उस पर कुठाराघात नहीं करें। आई कॉल अपॉन द ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, आई एक्सपेक्ट ऑल साइड्स to listen to the leader of the opposition in rapt attention. That will go a long way in giving us a foundation how we move forward. Please. I am grateful to you. You have given a chance to me to speak. I rise today with a heavy heart, expressing my anguish over the bent way in which the parliamentary traditions and rules of procedure, the undemocratic, unparliamentary words expunged of my remarks in regarding to our speeches on motion of thanks from the President Rajya Sabha Lok Sabha. Sir, the remarks which I made, they are parliamentary, within the parliamentary working. And Rajni Patil, unnecessarily, she has been suspended under the pressure of government. And government always they wanted to suspend One second. Please, one second. She has not spoken. Please, 1 second. The House could Please. have listened to her. Leader of the opposition, I request you, you took the floor and you have indicated in so many words that the chair is acting under pressure. These are expunged. No. You are forfeiting your right to hold the floor. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. Every time you make an allegation, chair is acting under pressure. How can that be countenanced? You make it outside, you make it inside the house. No, sir. Sorry. No. You were not in favor of suspending. Shri Jawahar Sarkar. Shri Dr. Radha Mohan Das. Dr. Radha Mohan Das. 1 अप्रैल 2016 इस देश में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ की गई थी। 2,94,94,000 मकानों का लक्ष्य था, लेकिन उसके सापेक्ष 3,15,00,000 मकान सैंक्शन किए गए। The state government and request them to send it all together even at one go. Sir, before you, I would suggest that within a reasonable time on the receipt of that, we'll clear it. You've not sent for 1 year and you keep blaming us that you're not giving us the money in time. On the contrary, in the devolution matter,
tax devolution as per the Finance Commission recommendation. Even this month, 2 installments in the place of 1 has gone to every state. So Kerala benefits from that as well. So, Premachandranji, through you I request, sir, he should expedite this from 5 years. Question number 144, Shri K. Subbaramayan, माननीय मंत्री महोदय पटल पे श्री मनीष तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर से ऐसा लगता है कि सरकार में या इनके मंत्रालय में और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में विरोधाभास है। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इतिहास का पुनर्लेखन नहीं कर रही है। And now for some more top stories that we're tracking. Jammu and Kashmir Apni Party President Altaf Bukhari has said his party will not allow non-locals to settle in the Union territory. Bukhari said that the land in Jammu and Kashmir belongs to the people of the erstwhile state of J&K. The former minister promised to reverse all anti-people decisions of the administration once his party comes to power. He made the comment as he criticized the administration for its ongoing anti-encroachment drive to retrieve state land. हम सब जम्मू कश्मीर के हमारे मुद्दे साझे हैं, हमारे हल भी साझे हैं। मैं एक आश्वासन आपको देता हूं, जिस वक्त इस पार्टी की सरकार आएगी, ये जितने भी लोगों के मुखालिफ इन्होंने डिसीजन लिए हैं, जो भी डिसीजन मैं नहीं कहूँगा, चाहे वो दरबार मूव के डिसीजन हो, चाहे वो ये जो आज डिमोलिशंस के, तो रेगुलराइज करनी पड़ेगी कॉलोनियाँ आपको। इसके बिना और कुछ हल नहीं है। From Jammu to national capital, Aam Aadmi Party is protesting against the central government, demanding action against Adani on the Adani crisis. AAP has alleged that Adani and Prime Minister Modi are hand in glove with each other. Meanwhile, hundreds of AAP workers were detained from outside the BJP's office in Malleshwaram. The Aam Aadmi Party staged a protest against the BJP in Jammu, demanding an inquiry into the Adani scam. According to sources, AAP Ghirao BJP Jammu office. Meanwhile, party workers have been detained during the protest. Further information regarding it is underway. The Madhya Pradesh government has clarified that no prohibitory order was issued banning the use of tandoors in the state. This was after reports of the Madhya Pradesh government announcing a ban on the use of tandoors started surfacing on social media. India reports 124 new COVID infections, while the active caseload has increased to 1,843 according to Union Health Ministry data updated on Sunday. Government directs the INSA-COG under the supervision of Department of Bio. रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि जनहित में चंदौली मझवार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव पर विचार किया जाए, जिससे क्षेत्र की ग्रामीण जनमानस को रेलवे की सुविधा का लाभ मिल सके। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। It is shown to the rest of the country and the world. It is truly an insult of the House, and they are repeatedly disrupting. I don't know whether we will have to name the members and take appropriate action against them. But considering that the mood is very agitated, may I suggest that you adjourn the House for some time and talk to the leaders whether they are interested in running the House. Honorable members, I hereby name Raghav Chadha, Mr. Pathak,
संजय सिंह, मिस्टर केतकर, इमरान प्रतापगढ़ी, पीडी नेतम, And still to come on Republic TV, the Law Minister slams the ecosystem. And also coming up next, we bring you the Samajwadi Party leaders' Hindu rant. And we now get a news from Maharashtra's Nanded, where we are getting a report of VHP workers allegedly being thrashed by cops. Here are all the details about the incident. Take a look. A shocking incident has come to light from Maharashtra's Nanded, where some VHP workers were allegedly being thrashed by cops. The incident comes after VHP workers cracked down cow smugglers and informed the same about the police. Neither any case filed nor registered any FIR, these police cops started mercilessly thrashing the cow protectors. In fact, Republic accessed the video in which the API of Islapur police station can be seen beating the protectors. Calling out the officials, this is what VHP worker said about the entire incident. उन कसाईयों की तहकीकात करने के बगैर अपने कार्यकर्ताओं को ही उनके पुलिस वैन में बिठा के रखा और लगभग 3 घंटे तक उनको वैसे ही बिठा के रखा जब तक वो सारे कसाई लोग वहां से भाग चले. And on being confronted by Republic, the Nanded SP denied all the allegations. विश्व हिंदू परिषद और कुछ कसाईयों के बीच अनबन था और उसको ही कोई रिलेशन नहीं है, वो तो क्लियर है. देखिए, ठीक है, इट्स अ फैक्ट. वो तो वेरीफाइड भी है कि वो जो गाड़ी पहले पकड़ी गई, हाँ, वो गाड़ी 2 गाड़ियां थी. उसमें विलेज के लोगों ने, ग्राम पंचायत के लोगों ने गाड़ी के जानवर बेचे थे. वो गाड़ी लेके जा रही थी. कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया, वो गाड़ी इंटरसेप्ट हुई और इनको सिर्फ इतना कहा गया कि आप खुद उसको इंटरवीन मत करो, पुलिस को करने दो, आप खुद रोका मत करो, लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है. अच्छा, तो 149 की नोटिस उनको दी थी, ठीक है. उसमें कोई विषय नहीं, उसमें किसी को वो वीडियो उससे संबंधित हो भी नहीं सकता. एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है. Prime Minister Modi inaugurates Asia's biggest aero show 2023 in Bengaluru. India's defence might is on display. Giant leap for Atmanirbhar Bharat. Aam Aadmi Party now parrots the Congress fires Raja Bhavan insult. The opposition questions the governor reshuffle process. Law Minister hits out at the ecosystem. Now, after the Congress party, the Aam Aadmi Party has questioned the appointment of retired Supreme Court judge as a governor. Sanjay Singh has
questioned the BJP, saying that the BJP appointed the governors to control the state government. He also went on to say that it's not Raj Bhavan but Raja Bhavan. Sanjay Singh adding that the person who had been chosen as the governor has worked for the BJP for centuries, so certainly they will continue working for the BJP. So that's a comment that is come in from the Aam Aadmi Party, Sanjay Singh. We're going to listen into that bite. ये राज्यपाल क्यों नियुक्त हो रहे हैं पूरे देश भर में? ये नियुक्त हो रहे हैं चुनी हुई राज्य सरकारों पर डंडा चलाने के लिए, वो चाहे एलजी हो चाहे राज्यपाल हो। आप तमिलनाडु में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए। तो राज्यपाल का काम क्या है? एक चुनी हुई सरकार अगर है उसको काम करने दो। तो मेरा अपना अगर आप मत पूछेंगे तो मैं तो समझता हूं कि ये राजभवन जो है ये राजा भवन के रूप में तब्दील हो गया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें होती हैं, उन सरकारों को अपने विवेक से काम करने की छूट होनी चाहिए और ये राज्यपाल और एलजी ये सब बंद करना चाहिए। इसमें फालतू एक तो उनके प्रोटोकॉल में पैसे खर्च होते हैं करोड़ों रुपए, उनको एक वोट नहीं मिलता है, पूरी की पूरी सरकार वो चलाना चाहते हैं, सारे तंत्र पे वो डंडा चलाना चाहते हैं। इसलिए मेरा तो अपना मत है कि ये तो बंद ही हो जाना चाहिए, राज्यपाल और एलजी। और दूसरी चीज क्या है, जो व्यक्ति बीजेपी में 50 साल तक काम किया है, अब किसी काम का नहीं बचा, आपने उसको राज्यपाल बना दिया तो वो जाके तुरंत निष्पक्ष हो जाएगा, रात ही रात उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, वो तुरंत संवैधानिक पद के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखेगा। ये कैसे संभव है? अब देखिए कितनी बीजेपी नेताओं को उन्होंने राज्यपाल बना दिया। तो पार्टी वर्कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम किया है उन्होंने, वहां भी जाके पार्टी का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक जज का ही सवाल क्यों उठ रहा है? बीजेपी के तमाम नेता जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में काम किए हैं, वो आज राज्यपाल बन गए, तो वो निष्पक्षता से काम करेंगे। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि जब एक चुनी हुई सरकार जिसको जनता चुनती है उसके ऊपर राज्यपाल या एलजी बिठाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। Well, so it appears that the opposition may have opened another front against the government. The issue of the appointment of governors being brought out by various political parties. You just heard Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party. And earlier, of course, there was also another comment that came in from Manish Tiwari of the Congress. Well, I think it calls for a larger discussion with regard to the post-retirement appointment of judges. Because this is not the first time that this has happened. If you recall, a former Chief Justice of India was also appointed as the governor of a state. Similarly, there have been from time to time concerns which have been articulated, some of them which you referred to with regard to what late Mr. Arun Jaitley had said. So therefore there is a need for a broader, wider discussion as to whether people who have served in the apex judiciary should really be qualified to or should they be accepting such post-retirement sinecures. It is a serious question which needs to be debated. ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे बैठे। आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राप देने की हैसियत में नहीं, और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। And still to come on Republic TV, the United States shoots down a fourth unidentified airborne object in its airspace. And we now get a news from Maharashtra's Nanded, where we are getting a report of VHP workers allegedly being thrashed
by cops. Here are all the details about the incident. Take a look. A shocking incident has come to light from Maharashtra's Nanded, where some VHP workers were allegedly being thrashed by cops. The incident comes after VHP workers cracked down cow smugglers and informed the same about the police. Neither any case filed nor registered any FIR, these police cops started mercilessly thrashing the cow protectors. In fact, Republic accessed the video in which the API of Islapur police station can be seen beating the protectors. Calling out the officials, this is what VHP worker said about the entire incident. उन कसाईयों की तहकीकात करने के बगैर अपने कार्यकर्ताओं को ही उनके पुलिस वैन में बिठा के रखा और लगभग 3 घंटे तक उनको वैसे ही बिठा के रखा जब तक वो सारे कसाई लोग वहां से भाग चले. And on being confronted by Republic, the Nanded SP denied all the allegations. विश्व हिंदू परिषद और कुछ कसाईयों के बीच अनबन था और उसको ही कोई रिलेशन नहीं है, वो तो क्लियर है. देखिए, ठीक है, इट्स अ फैक्ट. वो तो वेरीफाइड भी है कि वो जो गाड़ी पहले पकड़ी गई, हाँ, वो गाड़ी 2 गाड़ियां थी. उसमें विलेज के लोगों ने, ग्राम पंचायत के लोगों ने गाड़ी के जानवर बेचे थे. वो गाड़ी लेके जा रही थी. कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया, वो गाड़ी इंटरसेप्ट हुई और इनको सिर्फ इतना कहा गया कि आप खुद उसको इंटरवीन मत करो, पुलिस को करने दो, आप खुद रोका मत करो, लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है. अच्छा, तो 149 की नोटिस उनको दी थी. ठीक है, उसमें कोई विषय नहीं, उसमें किसी को वो वीडियो उससे संबंधित हो भी नहीं सकती. हाँ, ठीक है. दूसरे जो घटना है, दूसरे गांव में यात्रा थी, वो यात्रा में कुछ झगड़े हो गए थे. उस झगड़े को लेकर पुलिस वहां गई थी और पुलिस ने उनको मेडिकल के लिए भेजा था, ऐसा उसका एपीआई का कहना है. और कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे पुलिस A surveillance drone of the security forces crashed inside the Leh airport in the Ladakh Union Territory. The incident was reported today morning at around 8 when the drone that was on a surveillance routine mission crashed and the flames came out of the airport. Important to mention that soon after the incident, the Air Force authorities have decided to halt the air operations owing to any untoward incident. However, the situation is under control. The local police was also informed by the authorities about the incident happening and there was no loss of life or any infrastructure that was reported. However, there was flames that were coming out. Important to mention that the airport in the Leh as well as the airstrip in the Kargil, they come under the defense forces and the Indian Air Force also operates from the same. This was a routine sortie of the drone when it crashed inside the Leh airport. The authorities have also informed the seniors in the Air Force installation. With Gaurav Sani, Gusimran Singh for Republic Media Network. ये जो पवेलियन है, जो विंग ऑफ द फ्यूचर है, ये अपनी पंखों की उड़ान के साथ आगे बढ़ता हुआ हम देख भी पा रहे हैं. डिफेंस विंग्स लिखा हुआ है उस पर. बिल्कुल. अच्छा, देखिए, Welcome back. You're watching This Morning, and in other news that we're tracking, on the 9th of November in 2019, 5 judges read the verdict and put an end to the decade-long Ayodhya dispute. But the Congress has now attacked Justice Bobde with the accusation that he has RSS links. Here's more. On November 9, 2019, these 5 judges read the verdict and put an end to the decade-long Ayodhya battle. The man on the far right is Justice S. Abdul Nazir, who has now been appointed as the governor of Andhra Pradesh. The judge who gave India many landmark verdicts like abolition of triple talaq, demonetization and right to privacy is under Congress attack. Judges को गवर्नमेंट जॉब देना, गवर्नमेंट पोस्ट देना अनफॉर्चुनेट है. एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको भेज देती है, जिससे लोगों का यकीन जुडिशरी पे कम होता चला जाता है. जस्टिस गगोई के बनने के बाद जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाना
उन लोगों के शक और शुबे को और मजबूत करता। This is not the first time that Congress has led a smear campaign against judges. Justice Ranjan Gogoi came under similar attack when he was sworn in as Rajya Sabha MP. I, Ranjan Gogoi, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. Justice Bobde has been targeted with the accusation that he has RSS links. And the trend has continued for Justice S. Abdul Nazir. ये वही जज साहब हैं जिन्होंने अयोध्या की जो 5 जजेस की बेंच थी उसमें इनकी एक हिस्सा थे और वो जो उसका वर्जन आया था, जो उसका फैसला आया था, उसमें इन्होंने पॉजिटिव दिया था। और यही वो जज साहब हैं जिन्होंने नोटबंदी को Now, the Supreme Court has dismissed a plea challenging the delimitation exercise carried out for redrawing the Legislative Assembly and Lok Sabha constituencies in Jammu and Kashmir. Do remember that 2 Kashmir residents had challenged the delimitation process, saying that it went against the law which had put a freeze on delimitation in the country until 2026. So, the Supreme Court dismissing the plea that had challenged the delimitation exercise that was being carried out for redrawing of the Legislative Assembly and Lok Sabha constituencies in the UT of Jammu and Kashmir. Now, a bench comprising Justice S.K. Kaul and Justice A.S. Oka passed the order a short while ago. So essentially, we are seeing that the Supreme Court has dismissed the plea that had argued against the delimitation exercise that was being carried out in Jammu and Kashmir. 2 residents of Kashmir had gone to court against the delimitation exercise that was being carried out in Jammu and Kashmir, saying that there was a law which had put a freeze on delimitation in the country until 2026. You are watching Republic TV. We slip into a very short break. On the other side, we bring you more news, including India's defense might is on display in Bengaluru. And we now get a news from Maharashtra's Nanded, where we are getting a report of VHP workers allegedly being thrashed by cops. Here are all the details about the incident. Take a look. A shocking incident has come to light from Maharashtra's Nanded, where some VHP workers were allegedly being thrashed by cops. The incident comes after VHP workers cracked down cow smugglers and informed the same about the police. Neither any case filed nor registered any FIR, these police cops started mercilessly thrashing the cow protectors. In fact, Republic accessed the video in which the API of Islapur police station can be seen beating the protectors. Calling out the officials, this is what VHP worker said about the entire incident. उन कसाईयों की तहकीकात करने के बगैर अपने कार्यकर्ताओं को ही उनके पुलिस वैन में बिठा के रखा और लगभग 3 घंटे तक उनको वैसे ही बिठा के रखा जब तक वो सारे कसाई लोग वहां से भाग चले. And on being confronted by Republic, the Nanded SP denied all the allegations. विश्व हिंदू परिषद और कुछ कसाईयों के बीच अनबन था और उसको ही कोई रिलेशन नहीं है, वो तो क्लियर है. देखिए, ठीक है, इट्स अ फैक्ट, वो तो वेरीफाइड भी है कि वो जो गाड़ी पहले पकड़ी गई, हाँ, वो गाड़ी 2 गाड़ियां थी. उसमें विलेज के लोगों ने, ग्राम पंचायत के लोगों ने गाड़ी के जानवर बेचे थे, वो गाड़ी लेके जा रही थी. कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया, वो गाड़ी इंटरसेप्ट हुई और इनको सिर्फ इतना कहा गया कि आप खुद उसको इंटरवीन मत करो, पुलिस को करने दो, आप खुद रोका मत करो, लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है. अच्छा, तो 149 की नोटिस उनको दी थी, ठीक है.
उसमें कोई विषय नहीं, उसमें किसी को वो वीडियो उससे संबंधित हो भी नहीं सकती। हाँ ठीक है। दूसरे जो घटना है, दूसरे गांव में यात्रा थी, वो यात्रा में कुछ झगड़े हो गए थे। उस झगड़े को लेकर पुलिस वहां गई थी और पुलिस ने उनको मेडिकल के लिए भेजा था, ऐसा उसका एपीआई का को जारी किया। उसके बाद से एक प्रॉपर प्रोसेस कोशिश की जा रही है कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी जो प्लेटफॉर्म्स है उनको लिया जाए और खासतौर पर जो प्रोसेस है, ट्रायल्स की प्रोसेस है, उसको बहुत एक्सपर्टाइज किया जाए। इसके जरिए सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, जो PSUs की टेस्टिंग फैसिलिटीज है, वो प्राइवेट इंडस्ट्री को मुहैया कराई जा रही कि आप यहाँ आके टेस्टिंग कर सकते हैं और जो रिजल्ट है वो उन एजेंसीज के साथ साझा किए जा सकते हैं। तो कोशिश यही है सरकार की खास तौर पर कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेशन के जरिए आगे बढ़ा जाए और उससे आगे आकर इससे भी आगे कोशिश सरकार की ये है कि All right, so pictures on your screen are of the Prime Minister also attending an exhibition that is on currently at the venue of the Aero India 2023, accompanied of course by the Defence Minister Rajnath Singh. Now do remember that apart from the vast number of companies that are participating in this aero show, India is of course focusing on the indigenously developed technologies which are at the forefront of the capabilities that we are hoping to showcase at the Aero India 2023. Currently on your screens, of course, the Prime Minister flanked by the Chief Minister of Karnataka as well as the Defence Minister, or witnessing the Tejas. I think that was the Tejas over there on display. But apart from that, of course, India is hoping that the event will be able to showcase design leadership as well as growth in the UAV sector, defence space as well as futuristic technologies. Joining us on the broadcast right now is our Senior Executive Editor Abhishek Kapoor. Abhishek, of course, one of the key things that India is looking forward to after this air show is to be able to develop a large number of our defence needs indigenously. Well, absolutely. So Atmanirbharta is the underlying theme so far as defence sector is concerned, the Nupur, and if you listen to the Prime Minister in his address at the Aero India, he clearly, in fact, in numbers stated the ambition. So he said that we have almost brought our defence exports to 5 times from where we began, or we were in 2014, from about $250 million to about $1.5 billion now. And he said, all right, I think we are running into some sort of audio trouble with Abhishek over there. We're going to fix that and go back to him in just a bit. But pictures on your screen are of the Prime Minister flanked by the Defence Minister at the Aero Show. You're watching Republic TV and we'll get you more details when we come back. And we now get a news from Maharashtra's Nanded, where we are getting a report of VHP workers allegedly being thrashed by cops. Here are all the details about the incident. Take a look. A shocking incident has come to light from Maharashtra's Nanded, where some VHP workers were allegedly being thrashed by cops. The incident comes after VHP workers cracked down cow smugglers and informed the same about the police. Neither any case filed nor registered any FIR, these police cops started mercilessly thrashing the cow protectors. In fact, Republic accessed the video in which the API of Islapur police station can be seen beating the protectors. Calling out the officials, this is what VHP worker said about the entire incident. उन कसाईयों की तहकीकात करने के बगैर अपने कार्यकर्ताओं को ही उनके पुलिस वैन में बिठा के रखा और लगभग 3 घंटे तक उनको वैसे ही बिठा के रखा जब तक वो सारे कसाई लोग वहां से भाग चले. And on being confronted by Republic, the Nanded SP denied all the allegations. विश्व हिंदू परिषद और कुछ कसाईयों के बीच अनबन था और उसको ही कोई रिलेशन नहीं है, वो तो क्लियर है. देखिए, ठीक है, इट्स अ फैक्ट, वो तो वेरीफाइड भी है कि वो जो
गाड़ी पहले पकड़ी गई। हाँ। वो गाड़ी 2 गाड़ियां थी, उसमें विलेज के लोगों ने, ग्राम पंचायत के लोगों ने गाड़ी के जानवर बेचे थे, वो गाड़ी लेके जा रही थी। कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया, वो गाड़ी इंटरसेप्ट हुई और इनको सिर्फ इतना कहा गया कि आप खुद उसको इंटरवीन मत करो, पुलिस को करने दो, आप खुद रोका मत करो, लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है। अच्छा। तो 149 की नोटिस उनको दी थी, ठीक है। ओके। उसमें कोई विषय नहीं, उसमें किसी को वो वीडियो उससे संबंधित हो भी नहीं सकती। हाँ। ठीक है। दूसरे जो घटना है, दूसरे गांव में यात्रा थी, वो यात्रा में कुछ झगड़े हो गए थे। उस झगड़े को लेकर पुलिस वहां गई थी और पुलिस ने उनको मेडिकल के लिए भेजा था, ऐसा उसका एपीआई का कहना है। और कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे पुलिस ने मारहान किया है। अब ये जो गांव का इंसिडेंट है और जो गोरक्षक और वीएचपी का इंसिडेंट है, वो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। The VHP also wrote a letter to the State Home Minister and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, while asking him to take permit me to carry out the listed business, because that is mandate of the rule, constitution, expectation of the people. और माननीय सदस्यगण यदि अगर इस बात के ऊपर चिंतन नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, तो कहां होगी? One second. Digvijay Singh ji, but one second. I have given floor to Mr. Digvijay Singh. Please listen to him. माननीय सभापति महोदय, आपने सही फरमाया। ये संविधान के अंतर्गत जो नियम और कानून है, उसी के अंतर्गत हमें काम करना चाहिए। आज पूरे विश्व में एक ऐसा विषय जो सबको चिंतित कर रहा है, अनेक लेख लिखे जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमें जेपीसी में अगर माननीय सदस्य गिर फिर कर वही बात आएगी। नॉट अप्रोप्रिएट। सर, मेरी आपसे प्रार्थना है। प्लीज नो सर, आज नो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो। प्लीज। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के साथ कौन कौन सी कंपनियां किस लिहाज से यहां पर आकर निवेश कर सकती हैं? And we now get a news from Maharashtra's Nanded, where we are getting a report of VHP workers allegedly being thrashed by cops. Here are all the details about the incident. Take a look. A shocking incident has come to light from Maharashtra's Nanded, where some VHP workers were allegedly being thrashed by cops. The incident comes after VHP workers cracked down cow smugglers and informed the same about the police. Neither any case filed nor registered any FIR, these police cops started mercilessly thrashing the cow protectors. In fact, Republic accessed the video in which the API of Islapur police station can be seen beating the protectors. Calling out the officials, this is what VHP worker said about the entire incident. उन कसाईयों की तहकीकात करने के बगैर अपने कार्यकर्ताओं को ही उनके पुलिस वैन में बिठा के रखा और लगभग 3 घंटे तक उनको वैसे ही बिठा के रखा जब तक वो सारे कसाई लोग वहां से भाग चले। And on being confronted by Republic, the Nanded SP denied all the allegations. विश्व हिंदू परिषद और कुछ कसाईयों के बीच अनबन था और उसको ही कोई रिलेशन नहीं है, वो तो क्लियर है। देखिए, ठीक है, इट्स अ फैक्ट, वो तो वेरीफाइड भी है कि वो जो गाड़ी पहले पकड़ी गई, हाँ, वो गाड़ी 2 गाड़ियां थी, उसमें विलेज के लोगों ने, ग्राम पंचायत के लोगों ने गाड़ी के जानवर बेचे थे, वो गाड़ी लेके जा रही थी। कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया, वो गाड़ी इंटरसेप्ट हुई और इनको सिर्फ इतना कहा गया कि आप खुद उसको इंटरवीन मत करो, पुलिस को करने दो, आप खुद रोका मत करो, लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है। अच्छा। तो 149 की नोटिस उनको दी थी, ठीक है।
उसमें कोई विषय नहीं, उसमें किसी को वो वीडियो उससे संबंधित हो भी नहीं सकती। हाँ ठीक है। दूसरे जो घटना है, दूसरे गांव में यात्रा थी, वो यात्रा में कुछ झगड़े हो गए थे। उस झगड़े को लेकर पुलिस वहां गई थी और पुलिस ने उनको मेडिकल के लिए भेजा था, ऐसा उसका एपीआई का कहना है। और कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे पुलिस ने मारहान किया है। अब ये जो गांव का इंसिडेंट है और जो गोरक्षक और वीएचपी का इंसिडेंट है, वो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। The VHP also wrote a letter to the State Home Minister and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis while asking him to take the cognizance of the matter. But what can be called as a republic impact, the API एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। Prime Minister Modi inaugurates Asia's biggest air show, Aero India 2023. India's defence might is on display, giant leap for Atmanirbhar Bharat. The Aam Aadmi Party parrots the Congress, fires Raja Bhavan insult. The opposition questions the governor reshuffle process. The law minister hits out at the ecosystem. साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे बैठे। आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराधना में विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राप देने की हैसियत में नहीं, और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। The Samajwadi Party leader is at it again, insults Hindu saints, compares them to terrorists. And the US shoots down the fourth unidentified airborne object in its airspace. और जिस प्रकार से आपने अभद्र व्यवहार किया, जिस प्रकार से उनको तकलीफ दी और उनको लगभग 1.25 घंटे तक यहाँ पे आपका जो व्यवहार रहा वेल में रहकर, उसकी माफी मांगिए, उसके लिए आप पश्चाताप करिए, उस पश्चाताप के बाद फिर आप मोशन लेके आइए। क्योंकि सरकार की मंशा साफ हो गई और अंदर जो है बाहर आ गया, ये किसी भी हालत पे अपने अडानी को बचाने के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं। 10 लाख करोड़ का जो बदला। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, एक बार बैठिए। Honorable member must know, I have already indicated, and you should know it. Your memory is sharp. You are a young man. Those whom I love suffer the most. Take your seat. Take your seat. Honorable members, if there will be few things left as to what happened in Rajya Sabha during part of this session, then I can tell you, because I get input. And I have sleepless nights also because of that. One, there was boycott by some parties of the joint presidential address. 2 parties. Second, two parties. 1 second. The second is the kind of conduct with Manya Sadasyagan,
पूरी दुनिया देख रही है। हमारा आचरण ठीक अपेक्षा के विपरीत है, संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात है। मेरे तो समझ के परे है कि विद्वान सदस्यगण, माननीय सदस्यगण किस प्रकार ऐसा आचरण कर सकते हैं। आप सोचिए, क्या जनता हमसे उम्मीद करती है? करती है? नहीं करती। आई विल टेक अप द क्वेश्चन आवर नाउ। क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 106, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन मैं कैसे पढ़ूं? The House, I am constrained on account of persistent disruption, and I would go to the extent of saying deliberate disruption. In spite of my pleadings, obstruction is being created, and that is not the way to run the House. We have lost precious time already. We should have been. So, insult the guardian day in and day out? Is that the approach? Sorry. Honorable members, I am pleading with you for the last time. If the House will be subjected to such kind of disturbance, disruption, violation of rules, I will be constrained to act as per expectation of the people. They do not want us to be in disorderly situation. They do not want us to continue this. No. Honorable Minister. Table of the House. Honorable Minister. माननीय Supplementary number 1. माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को 1.12 करोड़ के स्थान पर 1.20 करोड़ मकान स्वीकृत करने, 1.06 करोड़ मकान डाउन करने और 67 लाख मकान हैंडओवर करने के लिए बधाई देता हुआ 2 सवाल पूछूंगा। मेरा पहला सवाल है कि किन राज्यों ने इस योजना का सही तरीके से लाभ नहीं लिया और कहां यह योजना सबसे कम लागू की जा सकी। Honorable Minister. All right, so as you watch, that is what is unfolding in the Rajya Sabha right now, where MPs Raghav Chadha, Sanjay Singh, Imran Pratapgarhi, Shakti Singh Gohil, Sandeep Pathak and Kumar Ketkar have been warned by the chair for entering the well of the House against any disruption or ruckus that is created in the upper house of the Parliament. Rajya Sabha chairman expunged multiple remarks made by the leader of the opposition, as the government is also demanding that the PM has been insulted and there must be an apology from the opposition leaders. Let's listen into what Mallikarjun Kharge had said. I stood with a heavy heart, expressing my annoyance over the very way in which the parliamentary traditions and rules of procedure, the undemocratic, unparliamentary words expunged of my remarks in regarding to our speeches on motion of thanks from the President Rajya Sabha Lok Sabha. Such the remarks which I made, they are parliamentary, within the parliamentary working. And Rajni Patil, unnecessarily, she has been suspended under the pressure of government, and government always they wanted to suspend One second. कर गए हैं 2-3 घंटे दो हमें स्टे ऑर्डर मिला है
हमें 2-3 घंटे तो दो, हम वहाँ पे लड़ के अपना हक लेंगे। नहीं मिलता भगवान के हाथ में ऐसी तोड़ देंगे। एक मौका तो चाहिए, 40 साल से रह रहे हैं, एक मौका तो चाहिए। खाली करके देंगे घर, एक घंटे में खाली हो सकता है। नया फ्रिज, नया टीवी, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, कई लाखों का सामान है, कहाँ से 1 घंटे में खाली कर देंगे? कहाँ से 1 घंटे में खाली हो जाएगा? तो यही कहना है कि इतनी जल्दी आखिर घर कैसे खाली हो सकता है? पुलिस से ये बात कर रहा है परिवार। हाई कोर्ट में पिटीशन डली हुई। क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ, वहाँ उधर बात करो। मैं तो अभी ये देखिए, इनका यही कहना है कि हम कोर्ट पहुंचे हुए थे और कोर्ट से लगातार हमारी दरख्वास्त चल रही है। निशांत आगे आइए, इधर की तस्वीरें देखिए, जो लगातार कार्रवाई है वो जारी है। ये देखिए, ये दूसरी मशीन जो है वो भी अब एक्टिव हो चुकी है और अब आगे की कार्रवाई के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देख लीजिए, सामान लगातार निकल रहा है और उसके बाद जो ध्वस्तीकरण का काम है वो भी यहाँ पर तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, दुकानों को खाली करने के लिए सामान को घसीट कर यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो लेकर आ रहे हैं और कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। ये देखिए, ये ऊपर से एक बार फिर ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। चूंकि देखिए, हेल्प भी कहीं ना कहीं जो टीम है वो करती हुई नजर आ रही है। सामान खाली कराने में मदद भी की जा रही है टीम के द्वारा। चूंकि तीसरे माले पर ये परिवार रह रहा है और सामान नहीं उतार पा रहा है, तो फिर उसके लिए मदद करने का काम भी लगातार जारी है। निशान थोड़ा आगे आइए। ये देखिए, मदद यहाँ पर जो टीम है वो करती हुई नजर आ रही है। सामान जो है वो डीडीए के लोग भी उतरवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ध्वस्तीकरण चल रहा है, लेकिन जहाँ मदद हो सकती है, जहाँ दरकार नजर आ रही है, तो वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ भी चल रही है। ये देखिए, अलग अलग मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं जिनसे ध्वस्तीकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बड़ी कार्रवाई, बड़े स्तर पर एक कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके जरिए जो अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो होती हुई दिखाई दे रही है। मगर ये जो सामान है वो भी जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, डीडीए के जो वर्कर्स हैं, अब अलग अलग कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस एरिया के भी जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, ये एक बड़ा सा छज्जा जो है वो यहाँ पर टूट कर गिर चुका है और एक के बाद एक अब बड़े स्तर पर जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पूरा मार्केट एरिया है। इस पूरे मार्केट एरिया को बताया ये जा रहा है कि लंबे समय से कोर्ट में भी ये मसला चल रहा है। इसको लेकर विवाद भी बहुत लंबे समय से है और यही कारण है कि कई बार नोटिस दिया गया, कभी ये कोर्ट चले जाते हैं, कभी हाई कोर्ट चले जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और इसी वजह से ये जो कार्रवाई है वो डिले हो रही थी। लेकिन अब जो है वो बड़े स्तर पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी जो परिवार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम स्टे लेने के लिए पहुंचे हुए थे और कुछ घंटों का और इंतज़ार अभी करना चाहिए, हमें इससे मिल जाएगा, उसके बाद फिर ये कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं परिवार के लोगों का कहना है। लेकिन बड़े स्तर पर जो कार्रवाई है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। तस्वीरें लगातार निशांत आपको दिखा रखे हैं कि किस तरह से ये जो डेमोलिशन है वो यहाँ पर चल रहा है, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देखिए, अब अलग अलग मशीनें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, तैनात नजर आ रही हैं और 3 से 4 मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं जो लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एक बड़े स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है। चूंकि कल की भी तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से विरोध देखने को मिला था और टीम को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, पुलिस को भी भारी चुनौती का सामना करना पड़ा था। जो विरोध है वो वहाँ इस कदर पहुँच चुका था कि पानी में मिर्च पाउडर घोलकर इस टीम पर फेंका गया था। लेकिन आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो बहुत ज़्यादा विरोध की परिस्थितियों का सामना यहाँ पर टीम को नहीं करना पड़ा, चूँकि व्यापारियों को पहले ही आगाह कर दिया गया था। कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें खाली कर ली थी और कई व्यापारी अब जब टीम पहुंची है तो अपनी दुकानों को खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक परिवार जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह रहा है उसकी यही मांग। And that's my colleague from Republic Bharat getting us details from the ground on the demolition drive that, remember, is underway as the protest is very much continuing. This despite people have been saying that this demolition should not carry on. They have been staying there for years, but the DDA is saying that all this is illegal construction and hence the demolition drive is now underway. जो न केवल स्वयं जगमगा रहा है बल्कि औरों को भी अपनी आभा से आलोकित कर रहा है। इन सब के पीछे अगर कोई प्रेरक शक्ति है तो वह है आपके आह्वान की शक्ति, आपके संकल्प की शक्ति और आपके लोक कल्याण के प्रति समर्पण की शक्ति। देवियों व सज्जनों, आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है।
हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं, जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है, जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है और इसे दुनिया में एक नई पहचान भी दी है। And meanwhile, there are several angry reactions pouring in over SP leader SP Maurya's insult to Hindus, where remember he had compared saints and seers with terrorists and butchers. He had made that comment yesterday, and the Hindu community is angry. They are demanding an apology, and there is widespread condemnation for this comment. Listen to the responses that have come in. सिर काटने और कलम करने की बात किए थे, 30 लाख 51 लाख देने की बात किए थे। हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी कर पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राप देने की हैसियत में नहीं है। और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी। और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे। और ये तो आतंकवादी है, इसको चढ़ावा देना बंद। सिर काटने और कलम करने की बात किए थे, 30 लाख 51 लाख देने की बात। पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस पे टिप्पणी की गई, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ देश के संतों ने, सम्मानित लोगों ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, उस पर पुनः स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस प्रकार से टिप्पणी आ रहा है कि उनको शैतान, उनको आतंकी, उनको जल्लाद जो कहा जा रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अत्यंत निंदनीय है। हमें लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह की बयान नहीं दिया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ नेता होते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस तरीके से संतों के प्रति एक तो उकसावे की राजनीति कर रहे हैं, आप धर्म ग्रंथों पे टिप्पणी करके उकसा रहे हैं, और जब वो प्रतिक्रिया कोई दे रहे हैं तो कहाँ तक आपको क्षमा मांगना चाहिए, तो उसके उलट आप उनको आतंकी बताया जाना आपके द्वारा, यह अत्यंत निंदनीय है। कहीं ना कहीं राजनीति के गिरता हुआ स्तर है। आपको राजनीति करनी चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, न कि धार्मिक विषयों पे अनर्गल टिप्पणी करना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने शब्द इस तरह के वापस लें, माफ़ी मांगें और दोबारा इस तरह की चीज़ें न बोलने का शपथ लें। इस तरीके के बयान देते हैं, लेकिन ये आस्था का अपमान है और इसका फैसला जनता करती है और किया ही है। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी को इतना बड़ा मैंडेट दिया तो आस्था के कारण ही दिया है, और जो बाकी लोग इसलिए पीछे रह गए जिनको जनता ने नकार दिया, क्योंकि इस तरीके के बयानबाजी और इस तरीके का आचरण, ये इस तरीके के नेताओं का चरित्र है। इसलिए मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि यहाँ जो देश के आस्थावान लोग हैं वो पूरी मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में और धर्म और आस्था के साथ खड़े हैं। And we are now cutting across to more breaking news coming in after the Congress party. Now the Aam Aadmi Party has questioned the appointment of retired Supreme Court judge as governor. Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party has said, and I quote, that BJP appointed the governors to control the state government. He's also gone on to say that it is not Raj Bhavan but Raja Bhavan. He added that person who had been chosen as governor had worked for BJP for centuries, and surely whosoever works for the BJP will be given plum positions through the party. Let's listen into that comment by Sanjay Singh.
ये राज्यपाल क्यों नियुक्त हो रहे हैं पूरे देश भर में? ये नियुक्त हो रहे हैं चुनी हुई राज्य सरकारों पर डंडा चलाने के लिए। वो चाहे एलजी हो चाहे राज्यपाल हो। आप तमिलनाडु में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए। तो राज्यपाल का काम क्या है? एक चुनी हुई सरकार अगर है उसको काम करने दो। तो मेरा अपना अगर आप मत पूछेंगे तो मैं तो समझता हूं कि ये राजभवन जो है ये राजा भवन के रूप में तब्दील हो गया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें होती हैं, उन सरकारों को अपने विवेक से काम करने की छूट होनी चाहिए और ये राज्यपाल और एलजी ये सब बंद करना चाहिए। इसमें फालतू, एक तो उनके प्रोटोकॉल में पैसे खर्च होते हैं करोड़ों रुपए, उनको एक वोट नहीं मिलता है, पूरी की पूरी सरकार वो चलाना चाहते हैं, सारे तंत्र पे वो डंडा चलाना चाहते हैं। इसलिए मेरा तो अपना मत है कि ये तो बंद ही हो जाना चाहिए, राज्यपाल और एलजी। और दूसरी चीज क्या है, जो व्यक्ति बीजेपी में 50 साल तक काम किया है, अब किसी काम का नहीं बचा, आपने उसको राज्यपाल बना दिया तो वो जाके तुरंत निष्पक्ष हो जाएगा, रात ही रात उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, वो तुरंत संवैधानिक पद के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखेगा। ये कैसे संभव है? अब देखिए कितनी बीजेपी नेताओं को उन्होंने राज्यपाल बना दिया। तो पार्टी वर्कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम किया है उन्होंने, वहां भी जाके पार्टी का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक जज का ही सवाल क्यों उठ रहा है? बीजेपी के तमाम नेता जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में काम किए हैं वो आज राज्यपाल बन गए, तो वो निष्पक्षता से काम करेंगे। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि जब एक चुनी हुई सरकार जिसको जनता चुनती है उसके ऊपर राज्यपाल या एलजी बिठाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। And remember, this is coming a day after what the Congress had said over the appointment of Justice Abdul Nazir to be made governor of Andhra Pradesh just within 40 days of his retirement, where the Congress has vehemently criticized the government, saying that this is a threat to the independence of the judiciary. Listen. Calls for a larger discussion with regard to the post-retirement appointment of judges, because this is not the first time that this has happened. If you recall, a former Chief Justice of India was also appointed as the governor of a state. Similarly, there have been from time to time concerns which have been articulated, some of them which you referred to with regard to what late Mr. Arun Jaitley had said. So therefore there is a need for a broader, wider discussion as to whether people who have served in the apex judiciary should really be qualified to or should they be accepting such post-retirement sinecures. It is a serious question which needs to be debated. So this furor from the opposition and the Congress and the Aam Aadmi Party, to be precise, over the appointment of former Supreme Court judge who was on the Ayodhya verdict bench, Abdul Nazir, within 40 days of his retirement, has now been made the governor of Andhra Pradesh, where the Congress and the Aam Aadmi Party saying that this is a big threat to the independence of judiciary. Remember, the centre has hit out. Law Minister Kiran Rijiju has said that the whole ecosystem is once again at it in full swing, and they should better understand that they can no more treat India as their personal fiefdom. So this is the position of the centre, criticizing the opposition over what they have said over Abdul Nazir's appointment. But after the Congress, it is the Aam Aadmi Party echoing the same line, and they are saying that this is not right on the part of the centre, and this could have greater repercussions in the future, as Justice Abdul Nazir was a part of several landmark judgments, including the Triple Talaq case, the Ayodhya Babri Masjid dispute case, and the demonetization case.
and the opposition pointing out that the very reason he's been made governor of Andhra Pradesh is because he has always sided the BJP. We're trying to get your other reactions on this as well, as we understand Justice Abdul Nazir, who was a part of several landmark judgments, I beg your pardon, and now it is his appointment as governor of Andhra Pradesh which is being heavily criticized, where the opposition is saying that it is the centre appointing him because he has always spoken in favour of the BJP, and this is the judiciary that stands heavily compromised. It is a great threat to the independence of judiciary. And I want to cut across to our executive editor politics, Aishwarya Kapoor, who's with me on the phone line, because Aishwarya, clearly the opposition not backing down on this one, and after the Congress it is the Apni Party also echoing the same line, questioning the government over the appointment of Abdul Nazir and saying that in the future this is a huge threat to the independence of the judiciary. But the main question is, Shwesha, that is this happening for the first time? Did this not happen in the previous regime? Are there not examples of former CBI directors, former judges, former officers being taken into the government and given different positions? Yes, if there has to be an ideological discussion on it, then yes, it should be open for discussion and then a final line should be drawn. But this is not happening for the first time. And I'm sure that politically speaking, this is not happening for the last as well. But Congress and the Aam Aadmi Party, and especially the Congress Party, because Aam Aadmi Party is still a very new player in the Indian political scene, but Congress, which has ruled this country for over 70 years, exactly knows that how many former bureaucrats, officers, even director level officers and then judges have been given different positions post-retirement by them under their government, whether it's UPA 1, UPA 2 or even prior to that. So this is not a new precedent. This is not something which is only happening for the first time. If there has to be an ideological decision, then all the parties should come on the same page and then take a decision. We saw a similar furore when in NDA, when in Modi won, we saw the former army chief VK Singh being given a ticket and then being made a minister. We saw a similar furore by the opposition, but then again, the same discussion came that this is not happening for the first time. If you want an ideological stand, नेताओं द्वारा विपक्ष के मंशा है कि जो सदन चर्चा के लिए, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग के लिए बनाया गया है, शायद वो उस पे ना चलने देने का निर्णय लेके ही रोज सदन में आते हैं। हमें बड़ा दुख होता है जब जीरो आवर मेंशन में कई माननीय सदस्य अपना बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहें और उनको मौका नहीं मिलता है। ये एक प्रकार से मेंबर्स के प्रिविलेज का भी उल्लंघन है। साथ ही साथ एक विषय उठाया गया कि माननीय रजनी पाटिल जी, जिन्होंने पूरे डायरेक्शंस होने के बावजूद, चेयर के डायरेक्शंस के बावजूद इल्लीगल वीडियो निकाला, गैर कानूनी काम सदन के अंदर किया, जिसके कारण उनको सस्पेंड किया गया इस सदन की कार्रवाई से। इस सत्र के लिए उनका सस्पेंशन विड्रॉ किया जाए, ये बात एक माननीय सदस्य ने चेयर से अनुरोध किया। मैं समझता हूं जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने ये काम करने के बाद बिना माफी मांगे चेयर के सामने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया था और जिस प्रकार से लगातार वेल में आके हाउस की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करने का काम विपक्ष कर रही है, ये सभी की देश के लिए एक बहुत गलत मैसेज है और सभी का मानना है कि उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। जिन माननीय सदस्यों ने चेयर का अपमान किया, जिन माननीय सदस्यों ने रूल्स लगातार तोड़े हैं, जिन माननीय सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को
अपना रिप्लाई नहीं देने दिया महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर, उनको माफी मांगनी चाहिए और फिर वो प्रस्ताव ले आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि सदन अपने विवेक से उस पर निर्णय लेगा, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। मैं मानता हूं कि उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और माफी मांग के विपक्ष के नेताओं ने ये व्यक्त करना चाहिए कि आगे वो सदन की कार्रवाई ठीक से सुचारू रूप से चलने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Union Minister Piyush Goyal calling out the opposition members for the disturbance and ruckus created in the parliament. Remember what has been happening in the upper house of the parliament, where the chairman has also called out the opposition and said that this is absolutely unacceptable. We'll leave it at that. We'll slip into a short commercial break right now, but we'll be back on the other side with more such stories that we are tracking for you this afternoon. Yes, it is the Aam Aadmi Party parroting what the Vadra Congress has said, firing the Raja Bhavan insult on the centre now. And the opposition questioning the governor reshuffle process. Law Minister hitting out at the ecosystem. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 10 years, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. And now for some more top stories that we're tracking. Jammu and Kashmir Apni Party President Altaf Bukhari has said his party will not allow non-locals to settle in the Union Territory. Bukhari said that the land in Jammu and Kashmir belongs to the people of the erstwhile state of J&K. The former minister promised to reverse all anti-people decisions of the administration once his party comes to power. He made the comment as he criticized the administration for its ongoing anti-encroachment drive to retrieve state land. हम सब जम्मू कश्मीर के हमारे मुद्दे साझे हैं, हमारे हल भी साझे हैं। मैं एक आश्वासन आपको देता हूं, जिस वक्त इस पार्टी की सरकार आएगी, ये जितने भी लोगों के मुखालिफ इन्होंने डिसीजन लिए हैं, जो भी डिसीजन, मैं नहीं कहूँगा चाहे वो दरबार मूव के डिसीजन हो, चाहे वो ये जो आज डिमोलिशन के, तो रेगुलराइज करनी पड़ेगी कॉलोनियाँ आपको, इसके बिना और कुछ हल नहीं है। From Jammu to national capital, the Aam Aadmi Party is protesting against the central government, demanding action against Adani on the Adani crisis. AAP has alleged that Adani and Prime Minister Modi are hand in glove with each other. Meanwhile, hundreds of AAP workers were detained from outside the BJP's office in Malleshwaram. The Aam Aadmi Party staged a protest against the BJP in Jammu, demanding an inquiry into the Adani scam. According to sources, AAP Ghirao BJP Jammu office. Meanwhile, party workers have been detained during the protest. Further information regarding it is underway. The Madhya Pradesh government has clarified that no prohibition. A very good afternoon. Thanks for tuning in this Monday afternoon. We are live and breaking. I'm Samiksha Srivastava. We'll get you all the top stories. Let's start with the top headlines this Monday afternoon. एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। Prime Minister Modi kickstarts Asia's biggest aero show of 2023 in Bengaluru. India's defence prowess on display jointly for Atmanirbhar Bharat.
Apni Party parrots Vadra Congress, fires Raj Bhavan insult. And opposition questions governor reshuffle process, law minister hits out at ecosystem. ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे बैठे। आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराधना पर विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राप देने की हैसियत में नहीं है और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। SP Neta at it again, insults Hindus, compares seers with terrorists. United States shoots down a fourth unidentified airborne object in its airspace. And we start with the news break coming in from Bengaluru. The first visuals coming in of Prime Minister's meeting with Kannada actors. Prime Minister there meeting top personalities in Bengaluru, meeting Kumble Srinath, Venkatesh Prasad among others. Prime Minister there also seen with actors Yash, Rishabh Shetty as well. So Prime Minister meeting the top Kannada actors in Bengaluru. Prajwal joining us live from Bengaluru. Prajwal, if you can help us read into this, a big message of sorts that seems that is being given as Prime Minister meets the top Kannada actors in Bengaluru. All right, we'll try and connect with Prajwal again, but the visuals there on your screens of Prime Minister Modi meeting top personalities in Bengaluru. This while he is in the city to be a part of the Aero show, which is taking place, a 5-day event taking place in Bengaluru. But the visuals there on your screens of Prime Minister meeting top personalities in Bengaluru, which includes Kumble Srinath, Venkatesh Prasad and actors Yash, Rishabh Shetty as well. And Prajwal is joining us live right now. Prajwal, good afternoon. If you can help us read into this Prime Minister meeting the top Kannada actors in Bengaluru. Now, looking at this, it was not only the top actors, but also the top businessmen and top sportsperson of Karnataka. He also met the families of Venkatesh Prasad, Javagal Srinath, and also Manish Pandey and Mayank Agarwal as well. Apart from which, he's also gone on to meet businessmen. He's met Nitin Kamath, who is the co-founder of Zerodha. And apart from which, he's also met all the actors this time, because these actors from Karnataka are basically going on and showcasing the success story of not only the Sandalwood film industry, but also Indian film industry across the globe. He's gone on to meet He's gone on to meet Yash and then Rishabh Shetty, Ashwini Puneet Rajkumar, and he's also met Shraddha, who is a famous stand-up comedian from Bengaluru as well. So this also threw a lot of light on the culture, diversity, and the sports and the contribution of all these personalities to the ecosystem in Karnataka, mainly the startup ecosystem. Yes. With many other private companies, founders also being a part of this meet. Absolutely. Prajwal, thank you for taking us through all those details. The visuals there on your screens of Prime Minister meeting the actors as well as business tycoons and those who have set up the founders of the startups in the country. All right, moving on to more news break coming in. This one from Tamil Nadu, where former congressman and Indira Gandhi's aide has made a controversial statement saying that Prabhakaran is alive and will emerge soon, going on to say that he knows the truth about the LTTE chief Velupulai Prabhakaran. So that's the big remark that's been made by Paza Medukaran. Varshini getting us this news break. Former congressman and Indira Gandhi's aide has made a controversial remark. So the big claim there that's been made by the aide is that Prabhakaran is still alive and he would emerge soon. அவர்களை பற்றிய ஒரு உண்மை அறிவிப்பினை
Karan, who is a former congressman, he says that he is going to reveal certain truths about the LTT chief Prabhakaran. He says that there has been a lot of rumors and a lot of guesses about his life has been going round on and off for the past few years. And now he announces that the LTT chief, Prabhakaran, is healthy and safe. He also speaks about how he will very soon emerge into the public eye. He also mentions about the new plans of the world while he comes back for the people of the Tamil Elam in Sri Lanka. He also since the Rajapaksa government has ended in Sri Lanka, the situation is currently very advantageous for the LTT chief, and this is exactly why this is the right time. All right, Varshini, they're getting us the details of what Madhukaran had to say. Varshini, if you could once again summarize it for us, what Madhukaran, the former aide of Indira Gandhi, had to say, and why is it sensational in many ways? Well, Samiksha, if you see, this is definitely very, very important because the death of the former LTT chief Velupillai Prabhakaran was declared in May 2009 during the Tamil Elam ethnic war that happened between the Sri Lankan government and the Tamil Elam, particularly the LTT. And after so many years, after almost 14 years now, we are seeing and we are hearing an official statement from one of his closest friends that he is alive and his whole family is alive and that he will be coming out soon. And he's also mentioning very recently about the kind of Sri Lankan situation prevailing, and that since the Rajapaksa government, who was their main opponent, main enemy during war in 2009, now come down, it is the right him to come back and come up with a lot of important welfare plans and moves that he could benefit from his statement. All these past years, there has been so many rumors and guessings that has been going around about his life because there was no proper evidence as to if it was him who was dead during that war or not, was not provided by the Sri Lankan government. And we also have a certain idea about what he was doing all these years. But now that somebody who has closely been with him, somebody who has ties with him comes out in the public and gives a formal statement about his well-being, it is definitely very shocking and this is apparently very controversial. Now that the Sri Lankan government will also, listen to these nations that will come up with so many responses. It is definitely important to note that a leader who has been declared dead 14 years ago, and to know that he is still alive from one age is definitely shocking. And if at all, we'll have to wait and see if at all it is true and if he's coming out and Varshini, what will be his plan of action once he comes back. Yes. Has he divulged? All right, we'll try and go across to Varshini again. There seems to be a network problem. But a big statement that has come in from Nedu Maran, who says that Prabhakaran is still alive and that he would emerge soon. That's a claim that's been made by Indira Gandhi's aide, saying that Prabhakaran is alive and his family as well is alive and that he's going to emerge very soon.
मैं एरो इंडिया के रोमांचक पलों का गवाह बन रहे सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमईज भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी है। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। साथियों, यहां एरो इंडिया के साथ ही डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव और सीईओज राउंड टेबल इसका भी आयोजन किया जा रहा है। Slipping into a very short break, but demolition drive continues amid protests in Delhi's Mehrauli. Details and live coverage on the other side. And we now get a news from Maharashtra's Nanded, where we are getting a report of a VHP workers allegedly being thrashed by cops. Here are all the details about the incident. Take a look. A shocking incident has come to light from Maharashtra's Nanded, where some VHP workers were allegedly being thrashed by cops. The incident comes after VHP workers cracked down cow smugglers and informed the same about the police. Neither any case filed nor registered any FIR, these police cops started mercilessly thrashing the cow protectors. In fact, Republic accessed the video in which the API of Islapur police station can be seen beating the protectors. Calling out the officials, this is what VHP worker said about the entire incident. उन कसाईयों की तहकीकात करने के बगैर अपने कार्यकर्ताओं को ही उनके पुलिस वैन में बिठा के रखा और लगभग 3 घंटे तक उनको वैसे ही बिठा के रखा जब तक वो सारे कसाई लोग वहां से भाग चले. And on being confronted by Republic, the Nanded SP denied all the allegations. विश्व हिंदू परिषद और कुछ कसाईयों के बीच अनबन था और उसको ही कोई रिलेशन नहीं है, वो तो क्लियर है. देखिए, ठीक है, इट्स अ फैक्ट. वो तो वेरीफाइड भी है कि वो जो गाड़ी पहले पकड़ी गई, हाँ, वो गाड़ी 2 गाड़ियां थी. उसमें विलेज के लोगों ने, ग्राम पंचायत के लोगों ने गाड़ी के जानवर बेचे थे. वो गाड़ी लेके जा रही थी. कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया, वो गाड़ी इंटरसेप्ट हुई और इनको सिर्फ इतना कहा गया कि आप खुद उसको इंटरवीन मत करो, पुलिस को करने दो, आप खुद रोका मत करो, लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है. अच्छा, तो 149 की नोटिस उनको दी थी. ठीक है, उसमें कोई विषय नहीं, उसमें किसी को All right, thanks for staying tuned to Republic. We start with the big news break coming in from Tamil Nadu. A big claim that's been made by former congressman and Indira Gandhi aide Prabhakaran, who says that, in fact,
the claim, a big statement that has been made by Nedumaran, who says that he knows the truth about the LTT chief Prabhakaran, saying that Prabhakaran is still alive. And remember that Prabhakaran is, of course, the LTT chief, the Liberation Tigers of Tamil Elum chief, who the former congressman Nedumaran says is still alive. He even goes on to say that he's soon going to announce a plan for the liberation of the Tamil race. So several such sensational statements that have been made by the former congressman and aide of Indira Gandhi, saying that Prabhakaran, the LTT chief, is still alive, and that very soon Prabhakaran would be announcing a plan for the liberation of the Tamil race. Varshini, of course, continues to be with us, getting us that big news break. Varshini, if you can put this into context for us, the statements that have come in from the former congressman and Indira Gandhi aide, of course, saying that the LTT chief is still alive. Well, definitely, yes, Shamiksha. So this statement that he has made is about where the LTT chief, Velupillai Prabhakaran, is. Because in 2009, during the ethnic war, it was declared that Prabhakaran was dead. He was shot dead. And now, after almost 14 years, a statement from one of his close friends is come out where he is claiming that he's still alive, he's still well, he's still safe and healthy, and his family, including his wife and daughter, are also alive. Is definitely shocking. And he's also spoken about certain issues regarding the Sri Lankan revolution that happened recently, when the Sri Lankan people revolted against their own government, and the Mahinda Rajapaksa's government has gone down. And that is exactly the right scenario for a person like Prabhakaran to come back into the world, is what his claims are. So he also mentions about how very soon he will be coming back into the world, into the public eye, and he will also be coming up with a lot of plans for the Tamil Elam, for which he was fighting back then in 2009. Therefore, this is exactly the claim being made by Nedumaran. He is speaking that Prabhakaran is alive. One of the very important leaders who took part in the ethnic war is alive, and that is definitely a huge thing when it comes to people and political parties from Tamil Nadu, people from Tamil Nadu, people who have relations and connections with the Tamil Elam in Sri Lanka will definitely resonate and be very, very happy hearing this kind of a claim from Nedumaran. And if at all it is true, if at all Prabhakaran is going to come out in the public eye, it is definitely going to be another important day where a lot of people, particularly the Tamil race from Tamil Nadu and Sri Lanka, there is a chance of them uniting back together and standing up for the lives lost in the war back then in 2009 is what is the most important thing that we will have to note here. Yes. Varshini, so this big statement that's been made by Nedumaran, has he given more details on what exactly is the basis of this big claim that he's made, one? And has he divulged any more details about the location of Prabhakaran? No, Samiksha, of the location. Though the press tried to ask him about the exact location, he did not divulge details about his location. But he did mention about how he is safe in a place, and he's been safe all this while, and he's waiting for the right time to come out in the public eye. And he also speaks about the strained relations as of now between China and India, how Sri Lanka is being used by China, and that this is the right time that he has to come out to fight against this. And he will stand once again for his people in Sri Lanka, and how they are waiting for the right time for him to come out. And when he decides when he will come out, they will come back with more details and other details regarding his whereabouts and regarding what is his plan of action when he comes out. Yes, Varshini, and just a follow-up question. Do you think that Nedumaran has come out in full support of Prabhakaran? The very fact that he says that he is in touch with the family members of Prabhakaran? All right, before... that is exactly... Yes, Varshini, just hold your thoughts for a moment. We have Sukhoi Satyan of the AIADMK joining us. Sir, if I can get your quick response to this, a big statement that has been made by Nedumaran, who says that Prabhakaran, the LTT chief, is still alive, and the fact that he says he's still in touch with the family of Prabhakaran. It's a banned organization because of its activities in Tamil Nadu. And Congress and DMK
are the one who supplied arms and ammunition, which resulted in the genocide of 1.5 lakh innocent Tamilians. Congress is a traitor and DMK is hand in glove. Both of them are traitors for Tamil Nadu. So this controversy is raked up for some political mileage and benefits. I don't think so they'll have much of a credibility. However, this has to be seriously looked into. We can't be complacent on this. The organization activities are like here and there. So like you're saying that there could be a political motive behind this. What exactly do you think would be the political mileage that probably the ruling government is trying to draw from this big claim that has come in from Medupara? Just triggering the sentiments for vote bank benefits. Shedding crocodile tears, stating that the innocent lives of Tamils were lost. And the person who safeguarded them is Mr. Prabhakaran. Already Tamil Nadu witnessed high level of sentiments with respect to the Sri Lankan genocide. So just to rake up